अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what is rule of law? What is rule of law and what is its applicability? What is its applicability on Article 14 of Indian Constitution? Article 14 of Indian Constitution. अब आपको याद रखना है that the concept of rule of law, the concept of rule of law was given by Dicey at the time of wars between England and France. At the time of wars between England and France, the concept of rule of law was devised against the French legal system, against the French legal system, where there were different laws for armies. There were different laws for armies and there were different laws for civilians. There were different laws for civilians. Because of which arbitrariness, arbitrariness came from the army, which resulted in tensions in the French society. इसके बाद you can write that in England there are three pillars of rule of law. First pillar is absence of arbitrariness. साथ में you can also write that this is present in India. In India, the constitution is designed in a way that there is absence of arbitrariness by the relevant institutions. इसके बाद you can write the second pillar, that is there must be equality before law. There must be equality before law. यानी जो लॉ है वो सबके लिए सेम रहना चाहिए, पीएम से लेके पीएन तक सबके लिए लॉ सेम रहना चाहिए. दिस रूल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया. इंडिया में भी देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. अब हम आते हैं थर्ड पिलर के ऊपर, विच इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रॉम द रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट्स एंड कस्टम्स. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अनरिटन. इंडिया में हम देखेंगे ये रूल प्रेजेंट नहीं है. दिस पिलर ऑफ रूल ऑफ लॉ इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया बिकॉज हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज इन अ रिटन फॉर्म. तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है. ये तीनों पिलर्स हमको यहाँ पे याद रखने हैं. इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, दैट इन द केस ऑफ इंदिरा नेहरू वर्सेस राज नारायण, रूल ऑफ लॉ was called to be the basic feature of Indian Constitution. इसके अलावा हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what is Article 14 and what are its exceptions. हमने Article 14 ऑलरेडी एग्जामिन किया हुआ है. वहां पे हमें देखा था that the first part of Article 14 said that state shall not deny any person equality before law. अब this part of Article 14 has been derived from Dicey's theory. इसके अलावा there is also a second part to Article 14, which is that equal protection of law within the territory of India. This rule has been derived from USA. ये रूल हमने USA से derive किया था. You can also write that in the case of Anwar Ali versus State of West Bengal, it was held that both the parts of Article 14 are complementary to each other. अब इसके बाद we should also remember that what are the exceptions to Article 14. कौन से केसेस में आर्टिकल 14 जो है वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट इन द केसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. अब जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनके पास काफी सारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं. फॉर एग्जांपल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डेफेमेशन फॉर एनीथिंग they say inside the house of the parliament. इसके अलावा you can also see Article 361 where it is written that there can be no case
against the head of the states. इसके अलावा आप देखोगे जो डिप्लोमेट्स होते हैं एंड एम्बेसडर्स होते हैं, इसके अलावा you can also write that the classic rule of Dicey is not truly applicable in India. Rather, in India, there is the rule of equality among equals. Equality amongst the equals. This rule was given by Jennings. यानी इंडिया में हम इक्वालिटी अमंग्स द इक्वल को देखते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है रिजर्वेशन का. Here there are different rules for marginalized communities. There are different rules for marginalized communities. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं there is equality among equals. First of all, we will bring these marginalized communities to the pedestal of equality, and only then we can say that there should be same rules for everyone in India. तो इस एस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं that in India there is equality among equals. लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट्स में हम ये बोलेंगे that there is equality before law in India. फॉर एग्जाम्पल एक SC/ST कम्युनिटी का पर्सन कोई क्राइम कमिट कर देता है या फिर एक अपर कास्ट का पर्सन एक क्राइम कमिट कर देता है, दोनों को यहाँ पे सेम क्रिमिनल लॉ फेस करना पड़ेगा. देयर विल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ हियर. यहाँ पे सेम ट्रायल का प्रोसीजर होगा एंड एवरीथिंग एल्स विल बी सिमिलर. यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को कोई स्पेशल प्रिविलेज इस केस में नहीं मिलेगी. अब आर्टिकल 14 के रिस्पेक्ट में दो और क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं. व्हाट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन and what is class legislation, and why the class legislation is prohibited. अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है. रीजनेबल क्लासिफिकेशन मीन्स कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी पॉलिसी बनाएगी फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, तो इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन सम साउंड लॉजिक. एक साउंड लॉजिक के पीछे कोई भी ग्रुप के लिए आप एक सेपरेट पॉलिसी बना सकते हो. विदाउट एनी साउंड लॉजिक एंड बेसिस आप किसी भी ग्रुप के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं बना सकते हो. यू कैन राइट दैट क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग must be based upon some intelligible differentia. And यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है that this classification must have some nexus with the objective. For example, reservation में एक सेपरेट ग्रुपिंग करी गई थी, लेकिन इसके पीछे एक साउंड लॉजिक था, एक साउंड बेसिस था कि हमको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना है. Here the differentiation was made because the legislature wanted to end the social inequality. तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस ग्रुपिंग के पीछे देयर वाज सम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, एंड इस क्लासिफिकेशन की वजह से द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग सोशल इक्वालिटी इज आल्सो फुलफिल्ड. तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं that this was a reasonable classification. लेकिन हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है that what is class legislation and why it is prohibited. Okay, for example, कल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं इंडिया में, इनके लिए हम 80% रिजर्वेशन कर देंगे. दिस विल बी क्लास लेजिस्लेशन. बिकॉज इस पॉलिसी के पीछे कोई भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है. इट विल बी नॉट कॉल्ड अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. बिकॉज यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आएगी, इसके पीछे कोई साउंड लॉजिक नहीं होगा, साउंड बेसिस नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ क्लास लेजिस्लेशन. जब एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आप विदाउट एनी बेसिस कोई स्पेशल प्रिविलेजेस लेके आ रहे हो, तो यू कैन राइट दैट एनी स्पेशल पॉलिसी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप
must be based upon reasonable classification. Must be based upon reasonable classification, and there should not be traces of. And there should not be traces of class legislation. Class legislation. Okay. तो एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे याद रखना है. इसके अलावा आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है that what will be the dynamic concept of equality? What will be the dynamic concept of equality? अब इसके बारे में there is a case of E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu. अब in this case, Justice Bhagwati held that equality is a dynamic concept. Equality is a dynamic concept and it must not be confined to. It must not be confined to traditional limits. From a positive point of view, equality is an antithesis. Equality is an antithesis to arbitrariness. To arbitrariness. When an act is held to be arbitrary, then it will be violation of Article 14 of Indian Constitution. Then it will be violation of Article 14 of Indian Constitution. And hence we can say that Article 14 is dynamic in nature. Article 14 is dynamic in nature and it will check traces of. It will check traces of arbitrariness at all times. At all times with respect to changing and ever evolving society. Changing and ever evolving society. यानी आर्टिकल 14 अपने को मॉडिफाई करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोसाइटी एंड कभी भी कोई भी अनजस्ट लॉ इनैक्ट होगा देन आर्टिकल 14 will act as a check upon that law. So this dynamic concept of equality was followed in the case of Menka Gandhi versus Union of India and in the case of R.D. Shetty versus एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो हमको ये चीज याद रखनी है कि आर्टिकल 14 विल मॉडिफाई इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स ऑफ द सोसाइटी.